अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा लेक्चर 3 माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। तो लास्ट टाइम हमने देखा था द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनी सिस्टम एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डैश where we have inputs normally coming from sensors and going to the actuators, that is the outputs, communication systems and other things. So processing में हमने देखा था कि हमारे पास कौन से potential contenders हैं that can be put into this box. So we had checked out कि गेट से लेकर बराबर हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर, CPUs, SOCs जो हमारे पास हैं, they can be taken it. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने ये देखा था कि जो वो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास है, द डिफरेंट पोटेंशियल कंटेंडर्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड के हिसाब से कितना ऊपर नीचे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में। सो चूँकि हमारा बेसिक मोटिव है माइक्रो प्रोसेसर को जानना, माइक्रो प्रोसेसर की प्रैक्टिस देखना, उसका आर्किटेक्चर देखना, उसका काम देखना, सो वी विल हैव ए वे जिससे हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। दैट इज़ बिल्ड अप ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर। दैट मीन्स कि एक माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे पास है, हाउ डू वी बिल्ड इट अप फ्रॉम बेसिक गेट्स। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक द सेम थिंग, दैट इज़ दैट आवर मोटिव, या जो हमने डिज़ाइन प्रॉब्लम ली थी, दैट वाज द रूम ऑटोमेशन सिस्टम। तो उसको आगे लेके फ्रॉम गेट इम्प्लीमेंटेशन वी विल सिंपली एड अप डिफरेंट थिंग्स so as to reach this particular thing called a microprocessor. So this is called a build up, the build up of a microprocessor. So let us go with it. Okay, so design problem हम start करेंगे. Let us go back to the digital electronics. So what we have to first frame, तो हमारे पास एक simple चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम टाइम टेबल, ट्रुथ टेबल, सॉरी। पढ़ा के दिमाग ख़राब हो गया, ट्रुथ को भी टाइम निकल रहा है। सो ट्रुथ टेबल, सो हमारे पास है रूम ऑटोमेशन सिस्टम, सो वी हैव टू क्रिएट अ ट्रुथ टेबल आउट ऑफ इट. सो विल कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल. So let us suppose we have sensors on one side, we will have this processing system on other side, and we will have actuators on other side. On sensor side, we will have light sensor, then we will have temperature sensor, and then we will have personal sensor. Or we can say proximity sensor. And we will have a switch called override switch. These will be acting as inputs. And on the output side, I will have a bulb for lighting. I will have a heater for heating. I will have a fan for cooling, and I will have alarm for buzzing. So in order to keep them simple, again हम अभी जो ये sensors रखेंगे, ये हम रखेंगे purely single bit. That means we will have a sensor. If there is light, it will give us logic 1. If there is no light, it will give us logic 0. Same way, if temperature is greater than a threshold, it will give us logic 1. If temperature is less than a threshold, give logic 0. If there is a person, give logic 1. If there is not a person, give logic 0. If we have pressed the override switch, give logic 1. If we haven't pressed the override switch, give logic 0. Same way, on the actuator side, if we provide logic 1 to the bulb, it will glow. If I will provide logic 0 to the bulb, it will go off. If I provide logic 1 to the heater, it will get on and heat this our system, that is our room. And if I provide it with a 0, it will get the heater off. If I provide logic 1 to the fan will go on, and if I provide logic 0 to the fan, it will go off. And at last, the alarm. If I provide logic 1 to the alarm will ring, and if I provide logic 0 to the alarm, it won't ring. So now the second thing is to create the algorithm. What we need to do. So for that, we will have to first make a natural table.
on the basis of this data, on the basis of what we have in mind. Okay, for the initial table, what we look at, the first thing is the light sensor. Let us denote it by LS. The second one is temperature sensor. The third one is proximity sensor. The fourth one is override switch. And then at the output side we have bulb B, we have heater H, we have fan F, and we have buzzer BZ. So क्योंकि ये हमारे पास इनपुट्स हैं, और ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, so we will check out कि on the basis of what inputs and outputs क्या होगा हमारे साथ. So सबसे पहले let us suppose light sensor shows us that it is dark. Temperature sensor shows us that it is cold. Proximity sensor shows us that there is no proximity. And override switch is off. So what will happen? So when there is dark and there is no proximity, that means no person is there and there is dark, so we don't need to keep the bulb on. So let us suppose bulb is off. So let bulb is off. And for heater, there is no proximity and it's cold, so again we don't need to put the heater on. Let us put it off. Same way for fan, it will be off, and there is no proximity, that means there would be any buzzer. This buzzer also off. We will have to add one more thing to this as input, that is security switch. Security switch. Why? Because when I will leave the home, I will put this switch on or off so as to change the settings of my room control system to either of the modes, that is security mode and not security mode. So we can say that जो हमारे पास ये बटन है, it is a mode switch that simply changes our output to security or not security, no security mode. जैसे हम घर से लीव करेंगे, फॉर एग्जांपल जो हम घर से लीव करेंगे तो हम सिक्योरिटी मोड को ऑन करेंगे. तो जब हम इस सिक्योरिटी मोड को ऑन करेंगे उसका मतलब अब उसके बाद नॉर्मली इंसान नहीं घुसेगा वहाँ पे, बिकॉज जो ओनर है उसने सिक्योरिटी मोड ऑन किया हुआ है, यानी कि उसने ये स्विच ऑन किया हुआ है. अगर उसके बगैर कोई और आ गया, दैट मीन्स वो अब ओनर नहीं है, ही इज़ अ बर्गलर या वो चोर है, ठीक है. तो उस वक्त अगर प्रॉक्सिमिटी दिखी तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कोई और आया, उस वक्त हमारा बजर ऑन होना चाहिए. सो फॉर दैट थिंग अगर हम वो पर्टिकुलर ये लेंगे इनपुट, तो उस वक्त हम बोलेंगे कि सिक्योरिटी स्विच हमारा है. नॉर्मली ये जो मोड था इसमें भी ये ज़ीरो था, ऑफ. सो इफ़ यू आई पुट द सिक्योरिटी मोड ऑन, देन इरेस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे क्या है, डार्क है, कोल्ड है, हमें खाली देखना है कि वेदर पर्सन प्रेजेंस इज देयर और नॉट, number of persons. So if it is yes, your buzzer will go on. Maybe उस टाइम हम अपना बल्ब भी ऑन करेंगे क्योंकि रात का वक्त हो सकता है, ठीक, ताकि ये पता चले कि बाहर से किसी को पता चले कि ये कैसे ऑन हो गया या बस भी हो गया साथ में. सो इज़ अ ड्यूअल इंडिकेशन कि आपके पास दो चीज़ें ऑन हो रही हैं. और यहाँ पे जो आपके पास हीटर और फैन है, दैट इज़ डोंट केयर अबाउट दैट. इसी तरीके से लेट अस सपोज हमारे पास है टेम्परेचर सेंसर. टेम्परेचर सेंसर कोल्ड दिखा रहा है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर यस है, लेकिन जो हमारा सिक्योरिटी स्विच है ये ऑफ है क्योंकि हमें सब कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन है वो ऑफ पे ही देखनी पड़ेगी, ठीक है. मींस
ٹیمپریچر سینسر از کولڈ اور آپ کا پراکسیمیٹی سینسر یس ہے, تو اوبویسلی اس کا مطلب کولڈ کا مطلب کہ تھریش ہولڈ سے نیچے, سو یو ہیو ٹو گیٹ یور ہیٹر آن, آپ کو ہیٹر کو آن کرنا پڑے گا. تو اس وقت جو آپ کے پاس لائٹ سینسر ہے, ڈونٹ کیئر فار دیٹ. اس وقت جو آپ کے پاس اوور رائڈ ہے, ہاں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ اٹ ان آف کنڈیشن, بیکاز وٹ ڈو یو مین بائی اوور رائڈ؟ اوور رائڈ مینس مینول آپریشن. اوور رائڈ مینس اگر آپ نے الگوریدم کو سیٹ کیا ہے کسی چیز کے لیے, جسٹ ڈو دا اپوزٹ. فار ایگزامپل آپ کمرے میں آ گئے ہو, آپ کمرے میں بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, اور باہر سے اینی گڑھ ہے, لائٹ نہیں ہے, تو سسٹم بولتا ہے کہ باہر سے نائٹ ہے اور اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو لائٹ کیا ہونی چاہیے؟ آن. مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا, اس کے پاس سونا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, جب سونا ہے تو لائٹ شوڈ گو آف. سو وٹ یو ول یوز اوور رائڈ. اس ٹائم اوور رائڈ از دا تھنگ یوز فار دیٹ تھنگ. سو اس وقت آپ کے پاس اوور رائڈ دا سسٹم والا جو ہے وہ چلے گا. سو نارملی جو آپ کے پاس نارمل سرکمسٹینسز میں یور اوور رائڈ ول بی آف. اچھا, تو اب یہاں پہ آپ کے پاس چونکہ اوور رائڈ آف ہے, تو دیٹ مینس یور ہیٹر شوڈ بی آن, یور فین شوڈ بی آف, یور بزر شوڈ بی آف, اینڈ دین یور بلب ڈونٹ کیئر, بیکاز یہاں پہ ہم کنڈیشن چیک نہیں کر رہے ہیں کس کی, ٹیمپریچر لائٹ سینسر. So again, there will be many conditions because the number of input variables جو ہمارے پاس ہیں, they are 1 2 3 4 5. So we have 5 input variables. So number of combinations will be 2 raised to power 5. That means 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 means 32 input combinations. So when there are 32 input combinations, for 32 input combinations, you will have different outputs. So now outputs are 1, 2, 3, 4. There are 4 outputs. So overall, out of these 32 combinations and 4 outputs, what you will get? How many Boolean equations you will get?